मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर्रहमानुर्रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम। सदकल्लाहुल अज़ीम। ये जो मैंने अभी तिलावत किया ना जी, ये सूरह हशर की आखिरी 3 आयात हैं और बड़ी ही कमाल की हैं। ये अल्लाह सुब्हानहू ताला का इंट्रोडक्शन है, ये विजिटिंग कार्ड है अल्लाह ताला का। और इसमें पहली जो आयत है कि वो गायब जानता है, सिर्फ वही जानता है। और फिर उसे ये सारे उसके नाम हैं अल्लाह ताला के, और जिस मर्जी नाम से पुकारो वो अल्लाह का नाम है। जो अच्छा नाम है वो सिर्फ अल्लाह का नाम है। तो ये इस आयत का मफहूम है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस पे अमल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नहीं तो फिर अभी ये खड़े रहेंगे, आप खड़े नहीं बैठे ना। अच्छा ख्वातीनो हज़रात, आज हमारे 2 लेक्चर्स हैं। एक लेक्चर हमारे प्रेसिडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर तारिक महमूद मियां ने देना है डायरिया पे, और डॉक्टर राना कासिम साहब प्रोफेसर ऑफ न्यूरो साइकेट्री हैं और कंसल्टेंट न्यूरो साइकेट्रिस्ट हैं सुरैया अजीम टीचिंग हॉस्पिटल में, और प्राइवेटली ये इलामा इकबाल टाउन में भी बैठते हैं। इन्होंने मुझे भी बताया था। इनका आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओसीडी पे, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो मैं डॉक्टर साहब को इन्वाइट करती हूँ आके इस टॉपिक के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमारा आज का टॉपिक है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। व्हाट आर द सिम्टम्स? वी आर गोइंग डायरेक्टली ऑन द सिम्टम्स। सारों को पता है कि ऑब्सेशन क्या होता है। ऑब्सेशन और उसकी कंपल्शन क्या होती है? ऑब्सेशन ऑब्सेशनल थॉट होती है, और कंपल्शन जो आप एक्ट करते हैं, जैसे कंटामिनेशन ऑफ फियर्स ऑफ जर्म्स और डर्ट, या कोई भी किसी भी किस्म की गंदगी। और कंपल्शन उसकी क्या होती है कि हाथ धोना शुरू कर देते हैं, नहाना शुरू कर देते हैं, वजू करना शुरू कर देते हैं। दूसरी एग्जांपल है नीड टू हैव थिंग्स जस्ट सो। कंपल्शन उसकी क्या? होर्डिंग, चीज़ां इकट्ठियां करनी है, फजूल चीज़ां चुक के ले आनी है, सेविंग थिंग्स, चीज़ां बचा के रखनी है। दिस वी ऑल्सो कॉल नॉर्मल इन फीमेल्स के तरीके नाल ਉਹਨੂੰ यूज करना। लेकिन खुले दिल वाले कहते ने शी इज ऑब्सेस्ड बाय डिफरेंट थिंग्स। लेकिन व्हाट आई थिंक इज इट इज कॉमन इन फीमेल्स। ऑब्सेशंस अगर ऐसे ना होना तो औरतें घर नहीं चला सकती, सीधी बात है। बचत बड़ी जरूरी है। अनवांटेड थॉट्स, इमेजेस, impulses that occur over and over again, they are accompanied by uncomfortable feelings such as fear, doubt and disgust. अब क्या होता है कि एक चीज वो सोच लेते हैं, अब उसके ऊपर जो है वो एक्ट करना शुरू करते हैं और करते चले जाते हैं। उसको रोकने की वो कोशिश नहीं करते, करें भी तो उनसे रुकता नहीं है। दैट इज कंपल्शन। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ OCD: कंटामिनेशन, परफेक्शनलिज्म, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, गिनती करके रखनी है आप चीज़ें, बार बार चीज़ें चेक कर रही हैं, कुंडी लग गई है, हांडी के थले चूल्हा बंद है, गैस बंद है, बिजली बंद है, स्विच बंद है, फिर हराम हलाल की कहानी पाई जाती है। अच्छा जी, फिर सुपरस्टिशियस होंगे ने, ए होया तो इस तरह हो जाएगा, ए होया तो इस तरह हो जाएगा, आज मैं 3 सितारे वेख लेने तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद जी रिलीजियस रिलीजियस जो होती हैं उसमें सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि नमाज पढ़ रहे ने तो सिर्फ उधर ही ध्यान हो गया, 5 की बजाय 8 नमाजा पढ़ लिया ने, कुरान पाक पढ़ रहे ने, हदीस पढ़ रहे ने, और ज़्यादातर वक्त फिर उसे चीज निकल जाता।
अच्छा वैसे ਇਹਦੇ में ਵਿੱਚ मैं एक अजीबो गरीब जी गल ऐड करना वा कि रोजाना 10 मिनट कुरान पढ़ना और हदीस पढ़ना ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਂਪਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਸੀਡੀ अर्ਲੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਉਹੀ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਹਰਾਮ ਹਲਾਲ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਲਾਈਏ ਤੇ ਚੰਗਾ। ਧੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ OCD ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹ ਮੁxtਲਿਫ डिसऑर्डर्स ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ दैट डिजीज ਹੁੰਦੀ। ਮਸਲਨ ਮੇਜਰ ਡਿਪਰੈਸਿਵ ਡਿਸਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਪੈਨਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਸੋਸ਼ਲ ਫੋਬੀਆ ਪੈਨਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਚ ਮੇਜਰ ਡਿਪਰੈਸਿਵ ਡਿਸਆਰਡਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੋਇਡੈਂਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰਸ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੈਨਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਫੋਬੀਆਜ਼ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ADHD is attention deficit hyperkinetic disorder ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਵੱਡਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ लेकिन मोस्ट कॉमनली बच्चा होता है अप टू द एज ऑफ 12। इसके वो मैं आएंगे उसके ऊपर उस टॉपिक पे आएंगे। अच्छा दिस कैन अकर एट एनी टाइम फ्रॉम प्री स्कूल एज थ्रू एडल्टहुड। ये जो मैंने अभी आपको पहले बताया बिफोर 40s ये हो जाता है। अगर किसी को बिफोर 40 होता है तो उसके सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं। जो पहले आपको सिम्टम्स आए हैं वो इसमें वैसे मेंशन नहीं है। वो सिम्टम क्या होते हैं मसलन वो ऑब्सेशन में इतना फंसा हुआ होता है कि सोता भी नहीं है खाता भी नहीं है या ज्यादा खा रहा होता है इक्वली इन मेल एंड फीमेल्स। अच्छा इसकी डायग्नोसिस जो है ना जी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज में ICD-10 में और 11 में थोड़ा फर्क उन्होंने डाल दिया। मेरा ख्याल है कि सिर्फ वर्ड्स का फर्क है बेसिकली और इसमें कोई फर्क नहीं है। मसलन हम अभी तक ICD-10 को ही फॉलो करते हैं 11 को कोई नहीं फॉलो करता क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो हम ICD-10 को ही यूज करते हैं। H1 ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और अदर ऑब्सेसिव कंपल्सिव सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर इज आल्सो सोमेटाइजेशन का हम पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अनडिफरेंशिएटेड सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर और हाइपोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स। बाज आपके पास पेशेंट आते हैं कहते जी यार टेस्ट कराओ तो फिर देखो मैं टेस्ट मैं अपने वास्ते नहीं कराना तेरे वास्ते कराना है तेरे खून का कराना है मैं पता लोड़ होगी करा लांगे। persistent somatoform and pain disorders depressive episode social phobia depressive episode मैंने आपको पिछले वो बताया था डिप्रेसिव एपिसोड में और डिप्रेशन में क्या फर्क होता है। फिर जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर डिलीरियम डिसऑर्डर एनोरेक्सिया नर्वोसा एटिपिकल एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा का मैं आपको पेशेंट ला के दिखाऊंगा। कोई देखा आपने किसी ने पेशेंट देखा है एनोरेक्सिया नर्वोसा का? वो खाने को तैयार ही नहीं होंगे रोटी तोल तोल के खा रहे होंगे ने आटा तोलते ने फिर वो रोटी खा बड़ी तो वास्तफर बड़ी खौफनाक चीज। course of OCD is it's a long, very long, almost not curable. I'm very sorry to say. This is one of the psychiatric disorder which is not curable. On average, 3 to 4 doctors and over 9 years before receiving the correct diagnosis. ये मैं आपको यहाँ एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ। मेरे पास किसी के थ्रू एक पेशेंट को लाया गया मक्का में जद्दा में वो रहते थे। तो जब वो लाया तो वो मैं खड़ी हुई है खातून थी 40 साल के करीब 45 साल एज होगी खानदान पूरा साथ खड़ी हुई है बस कहती है बोलती रहती है खड़ी हुई है हाथ धोने जाएगी घंटा घंटा बाथरूम में लगाएगी। तो USA से ट्रीटमेंट ले रही थी स्केजोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट ले रही। ट्रीटमेंट क्या दिया हुआ था फ्लॉक्सिटीन। जस्ट इमेजिन द कंडीशन ऑफ साइकियाट्रिस्ट इन USA। कोई ऐसी बात नहीं है कि USA हमसे को बहुत आगे है। और मैंने उसको सोच सोच के उसको मैंने कहा कहते नहीं सोती नहीं है वो इतनी ऑक्यूपाइड थी कि वो नींद ही नहीं आती। उसको मैंने
ठीक है, मैंने कभी अल्प्राजोलम नहीं दी, उस दिन मैंने उसको अल्प्राजोलम दी, आई एक्सेप्टेड, विच आई डिड वेरी राइट। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसको अल्प्राजोलम से हटा के तो दूसरी मेडिसिन देनी शुरू की, एंड शी बिकेम ऑलमोस्ट 80% ओके। अर्ली डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अर्ली डायग्नोसिस is very vital, because if you cannot diagnose OCD, it will become worse. When it becomes worse, your diagnosis cannot be right at that stage. Medicine, cognitive behavioral therapy helps most individuals experience long-term relief. Okay. Assessment, visits. Don't diagnose any psychiatric patient on your first visit. He will never tell you correct history. Take history from wife or husband, children, parents, friends, and you cannot do it on one sitting. Keep going with the visits and finally find what is the correct diagnosis. Anxiety disorder interview schedule. This is very difficult, but Yale Brown obsessive compulsive symptom checklist is again very complicated. Lighten obsessional inventory I have made for you, and I will give to Mr. Asif, and will send you on WhatsApp. Lighten obsessional inventory is very easy. It's about 30 questions, yes or no. Very nicely could be done in the clinic. Whenever you refer a patient of OCD to a psychiatrist, do give that paper to that patient and take this to the specified psychiatrist. The state trait anxiety inventory of children. Children don't have much obsessions. They don't come to you. They go to pediatrician and they destroy them. When they reach you, they are in almost incurable stage. What are the causes of OCD? Idiopathic, no concrete causes. Parents' role and non-role. Like, अब बच्चा है, उसको OCD हो गई है, हमारे यहाँ रवाज है, सीन में नहीं होता है, उन्होंने मारना शुरू कर देंगे, नहीं है उठांगे भाई ठीक हो जाएगा। साथ भी आके मेरे पास भी यही कह रहे होते, और मैं कहा भाई आप जरा बाहर तशरीफ रखिए, मुझे बच्चे से बात करनी है, या उसकी माँ से बात करते हैं। मदर इज लिटिल कंपैशनेट। Organic reasons, yes, of course, head injuries, brain chemistry, basal ganglia, and encephalitis. Basal ganglia are very much vital. In these cases, the basal ganglias are hypertrophied. So brain chemistry also changes with the frontal part of the brain, because it lowers the 5-hydroxytryptamine, the dopamine, you can say. It lowers. It is a lower level in the blood with dopamine. Differential diagnosis. Depressive disorder versus OCD. Preoccupation with depressive thoughts. ठीक है जी? Preoccupation with depressive thoughts. Depression में क्या होता है? बार बार एक ही बात सोचना, लेकिन वो OCD से डिफरेंट होता है। यही मैं अभी आपको बताया है कि कभी भी पहले विजिट पे डायग्नोज ना करें, कोई भी साइकियाट्रिस्ट, लेट इट प्रोलॉन्ग। आई हैव नो फ्रेंड्स। लाजमी गल इज वेरी वाइटल कि ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ फ्रेंड ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ हूं, फाइनली ही विल रन अवे। अच्छा, रियलिस्टिक नहीं होते ना ये डिप्रेशन वाले, लेकिन OCD वाले दे आर डिफरेंट। उनके थॉट्स एब्सर्ड जरूर होते हैं, बट दे आर क्वाइट रियलिस्टिक। GAD से कैसे, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? जी, इनसाइट होती है, अपनी बीमारी के बारे में नहीं होती। अगर हो तो वो उसको स्टॉप कर ले। अब मसलन आप कि मैं नॉर्मल बात बताऊं कि आप रात को गेट को अंदर से कुंडा लगा के ताला लगाते हैं, यू डू इट एंड कम बैक। OCD वाला बात एक्चुअली भूल जाएगा, they forget it, so they go again and check. When they come back, in the treatment we give is कि आप जब जाएं तो ये हम उनको डिस्क दे देते हैं कि रेड डिस्क मीन दैट यू हैवंट डन,
ग्रीन साइड यू हैव डन इट, जब वो ग्रीन साइड देखता है फिर नहीं जाएगा। ये इसे हम वो बिहेवियर थेरेपी एनी जी। वो तो डिमेंशिया हो जाता है ना, वो तो डिमेंशिया, वो मैं आपको बताऊंगा जब हम आएंगे अल्जाइमर पे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। वो डिमेंशिया, वो ओसीडी नहीं होती, वो डिमेंशिया होता है, वो भूल नहीं जाता, वो तो कुछ भी नहीं रहता, ये तो कम से कम जाके चेक तो कर रहा है बार बार। अच्छा, ये हमने आगे कर लिया, रियलिस्टिक ऑब्सर्ड। पेशेंट विद ओसीडी मे हैव एक्सट्रीमली इंटेंस इरेशनल थॉट्स। मसलन कि जी मैनू पता है आज चांद नहीं निकलिया, आज नमाज नहीं पढ़नी। चांद नमाज तक ही चल। दिस हैपेंड विद मी इन सम पेशेंट, इन वन ऑफ द पेशेंट। सो ये इरेशनल थॉट्स होते हैं और बड़े सख्त मजबूत है, फॉल्स फिक्स्ड डिल्यूजनल टाइप ऑफ things. The presence of compulsive rituals like वजू, वजू में खास खास बात भी होता है, पैर बार बार धो रहे हैं, तो मैं कहता तो जुत्ती धो लेनी सी ताकि पैर तेरे गंदे ना होंगे। बट एनीवे, हाइपोकॉन्ड्रियासिस आपके पास पेशेंट आते होंगे जो कहते होंगे टेस्ट करवाओ, जो आज जैसे आगे बताया, और ओसीडी, दे आर क्लोजली रिलेटेड, बोथ आर एक्चुअली एंजाइटी। The hypochondriasis and OCD both are anxiety traits. Unrealistic preoccupation of medical concerns. मुझे ये हो गया, मुझे खून कम हो गया, मेरा जिगर काम नहीं कर रहा, इसके टेस्ट करा दे। Presence of checking rituals to decrease anxiety. Or the same thing which we discussed before. Other illnesses and neurological disorder versus OCD. Anorexia and dysmorphic disorder. Dysmorphic means distorted. About the distortion of the body image occur in the context of another psychiatric disorder. अभी मैंने आपको बताया जैसे स्किज़ोफ्रेनिया लेबल किया हुआ था वहां पे यूएसए वालों ने उसको, बच्ची को, खातून को, इट वाज प्योरली ओसीडी। टॉरेट सिंड्रोम, टॉरेट सिंड्रोम का पता है किसी, रेट ऑफ ओसीडी है। टॉरेट सिंड्रोम होता है, इट इज अ सॉर्ट ऑफ jerks, body become stiff, and usually these type of patients die at age of 30. They don't go beyond 30 years of age. Tilcotelomania, what is this? This is a disease characterized by pulling out the hairs. Compulsive behavior of pathological gamblers and substance abusers. This is actually this is physiological phenomena. This is not pathological. But the gamblers, and they are very much keen to go for gambling, whatever the thing is. They are obsessed about it. Substance abusers, नशे वाला तो ये छुड़ा नहीं सकते, नशे वाले जाते करके 6 महीने साल उसकी अच्छी तरह उसकी केयर करो। Main idea of differential diagnosis is the presence of obsessive compulsive rituals, यानी कि रिचुअल्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ। the manner of compulsive thoughts, for example unrealistic versus realistic. ਮਸਲਨ ਨਮਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਰਕਾਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 4 ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 6 ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। appropriate inappropriate वही सिचुएशन है। अच्छा जी, so here is the main concern, फार्माकोथेरेपी एंड बिहेवियरल थेरेपी। बिहेवियरल थेरेपी पार्शियली आप खुद कर सकते हैं, बड़ी अच्छी, बहुत है। जो मैंने आपको कलर वाली बात बताई है, वो कलर वाली बात सबसे अच्छी है। एक कार्ड ले आने, घर वालों कहेंगे एक साइड से ग्रीन कर दें, एक साइड से रेड कर दें। उन्होंने कहा जी जिस साइड से रेड है वो आपका काम है, और जब वो ये कर ले तो उसे ग्रीन करना और उसको बताना है कि तुमने अब ये ग्रीन हो गया, अब ये काम नहीं करना, चलो वापस। एक ही हो गया।
थैंक यू। अच्छा, मेडिकेशन में इसमें बड़ी वाइड वैरायटी अवेलेबल है। सबसे पहले जो चीज इसमें दी जाती थी वो फ्लॉक्सिटीन या प्रोजैक, द ओल्डेस्ट known SSRI since last 50 years or even more, I hope. Fluvoxamine is another medicine which even in low dose works very well. Paroxetine, it's we have to give a high doses up to 40 milligrams. Sertraline works very nicely, but again 200 milligrams. But if they are combined with antipsychotic, these SSRIs and SNRIs, they are, if combined with antipsychotics, they work very well. They work very well and they give very good results. At least on medication, you can say that the patient is becoming up to 80%, 85% okay with medication and psychotherapy. Antipsychotics mostly used with the SSRIs, etc. This I will tell you in psychopharmacology. Improvement usually takes 3 to, this is actually academically written 3 weeks, but we see, not now, we'll do it later. Improvement usually takes 3 weeks, but I have seen that improvement occurs even after 3 days. Little improvement go along within 3 days, and then it can improve and the symptoms become much better. Symptoms are reduced but not eliminated. What I said. Okay. Tricyclic antidepressant enafrenil was one of the best used before, not now. But the side effects were sedation, blurring vision, weight gain, sexual dysfunction. But the one who with OCD is already in such situation that he is not, he or she is not sleeping. He is confined to home, so blur vision also there. Weight gain, they don't care. Sexual dysfunction, they are usually not married. Side effects of SSRIs are insomnia, motor restlessness, nausea, and diarrhea, but not with all. And because we have to give in high doses in OCD, so usually we see a little of the side effects. A very long term, not a long term, a very long term treatment is needed, maybe the lifetime. Sometimes there is a less symptomatology of OCD. Sometimes it increases too much. That it increases so much so that the patient, you think sometimes that the patient is not having OCD but psychosis. So behavioral therapy is one of the psychotherapies. It is exposure and response prevention. Okay, like you use do it like that somewhere where is dust, and ask him to. I'm doing, do it. So they are now. You don't have to wash your hands. Look what I do. It's okay now. Not able to eliminate their anxiety. लेकिन उनकी एंजाइटी खत्म नहीं होती उससे, वो फिर भी सोचेंगे कि जी तो वही आई है तो चंगा है। उनको रोक के रखना, वो जो है ना कार्ड रेड और ग्रीन वाला, वो यूज करना है। और ग्रीन कर रहे हैं ना, कभी तो नहीं, ग्रीन कार्ड हो गया। एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल फॉर ओसीडी पेशेंट। 80 to 90% improvement जो मैंने आपको आगे बताई है। Symptoms are reduced but not eliminated. Follow-up sessions are needed for relapse prevention. This is very vital and this is so much cost-consuming. Common CBT, which we are not going to do, this is not our domain, but at least you should know. Antecedent behavior consequences analysis, exposure therapy, journaling, worst and best case scenario, ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ. Mindfulness, activity scheduling and response prevention. अच्छा जी, worst and best case scenario. एक खातून अपने हस्बैंड के साथ मेरे पास आई,
age like 35 to 37, I suppose. नींद नहीं आती थी, 16 साल से मैं सोई नहीं हूं. 16 years have not slept. What are you talking, lady? She said, yes, it's like that. 16 years now, I haven't slept. Your age is 37. Since 21 years ago, you slept and you never slept again. Okay. Where are your parents? Father died. Mother is there. One brother. Very poor family. Married to a person, lived in near London. It's known as Luton. It is one of the third biggest airport of after Heathrow and Gatwick in London. And her husband was a taxi driver. Married since 4 years, no issue, but no sleep. I was suspicious. How could it be possible? Didn't you get the treatment in NHS in London? He said, I did, but no response, no good response. There was response, but no good response. Okay, how many hours you sleep in 24 hours if you count 1 hour at one time, 2 hours, 20 minutes like that? She said, I sleep less than 2 hours at night. And I asked her husband, is she right? She said, she's 100%. I sleep in the room above and she is sitting in the sitting room below. I said, okay, let's go for EEG. आप में से अगर किसी ने मेरा लेक्चर अटेंड किया हो EEG का जो फ्लैटीज में था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्लीप डिसऑर्डर की EEG. तो जो फिर उसकी EEG करवाई 2 किस्म की. एक उसको हैवी डोज दे के सुला दिया और उसमें REM हम चेक कर. REM gave a separate theta wave if there is REM, rapid eye movement sleep. But if there is no REM, there is no theta wave. And awake, of course. So her awake and sleep EEG was exactly same. I don't know what was the reason, but then I again took on the second visit, I took the history again. Nothing I got. 4th visit, again, history. I didn't give any treatment. But I thought it could be OCD, because that is the only thing where you cannot sleep properly, with sleep medication as well. She has taken a huge amount of sleep medicines in England as well. Anyway, I gave her a combination of fluoxetine and olanzapine, not very high dose, 6 milligram of olanzapine and 25 milligram of fluoxetine, 2 capsules at night, and she slept for 7 hours. This is the best combination I told you for OCD. And next day she called me and she was screaming with joy that I slept 7 hours after 16 years. Olanzapine and fluoxetine is available in the market. Yes, it's available. You can give separately even. Use of both therapies, I just told you before. The main thing is that the willingness of the patient to take the medication and willingness to work with the psychologist. They usually don't go to psychologists because they give alternate to their OCDs. So early diagnosis and treatment are very critical in OCD. With right support, individuals with OCD can lead fulfilling lives. Main thing is
illiteracy and ignorance in our system, that the parents do not realize what is the problem. Thank you for your attention. Next talk will be on bipolar affective disorder, and we will also deal with some of the psychopharmacology and vocabulary, the terms used in psychiatry and the medicines used in psychiatry. Thank you very much.